Hello friends, how are you all of you? In last lecture, I explained you about the matter. In this topic, we will try to understand the characteristics of particle of matter. Last time we studied about the matter. What is matter? Padarth. Now, what is inside it? That is the particle, the small matter, the big matter, the small matter. Means what is inside in the matter. Okay, that's the smallest part of the matter that is called the particle. Okay, Kan, Sukshma Kan. Okay, so in that context, let's try to understand the characteristics of particle. So, three characteristics are mentioned here. First one is the particle of matter have space between them. First thing. Second thing, particle of matter are continuously moving. Third, particles of matters attract each other. So all these three characteristics we will try to understand step to step. So first one, you see, particles of matter have space between them. So many times I am giving you one example at your home. You have seen that our mom, she prepared the lemonade, means the limbu sharbat. Okay. And what she mixed in water? Sugar, salt and lemon juice. You know very well, when we stir all these three things, it is completely dissolved in the water. It means there is a space, and that is the reason all these things accommodate in that space, and due to that reason they disappear and we are not able to see that. Is it clear? So it shows that particles of matter have space between them. अगर space नहीं होती थी तो वहां पे वो आ ही नहीं सकते थे. वो आ गए, it means there is space. Second, particles of matter are continuously moving. Okay, there is motion. There is no stagnant in the particles of the matter. जो भी कण है वो सतत घूमते रहते हैं, मूव ऑन करते रहते हैं. Is it clear? Let's take one more example. You take one incense stick, okay, and just take a smell of it. So you will feel its smell, but you keep it burn and in one side of the room and come you in the another side of the room, end of the room. Immediately you will not feel the smell, but after some time, few minutes later, definitely you will feel the smell. How it has come from you? आप तक कैसे ये पहुंचा? Okay, what it shows? It means the particles, they moves around the room and they carry that sense toward you. Okay, so in another word we can say the particles of matter possess the kinetic energy. One thing. Second, as temperature rise, okay, their motion become faster and faster. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. You just see, आपके घर में कभी कोई चीज तली जाती है तो तलने से पहले क्या करती है मम्मी? एक छोटा सा लंप उठा के, जो है समझो अगर भजिया बना रहे हैं तो छोटा सा लंप उठा के पहले डालते हैं, और जैसे ही जो है वो हीट बढ़ता है, जब तक हीट नहीं होता है वो नीचे रहता है, लेकिन जैसे ही हीट इंक्रीज होता है इमीडिएटली वो स्टार्ट ऊपर मूव करना शुरू कर देता है. व्हाट इट इंडिकेट? इट इंडिकेट एज टेम्परेचर हैज राइज द मोशन ऑफ द particles become faster and faster. Okay, and when these things mix with each other completely, that position, that situation is called the diffusion. Okay, and as heat has increased, diffusion also increase. Now next, particles of matter attract each other. There is a bonding between the two
two particles and they attract each other, and due to that reason they have the specific size, they have specific shape. Okay, now I am giving you one small example. एक story आपको सुनाता हूँ, so you will understand this one it better way कि उनके बीच में mutual attraction है. Okay, so see here, एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह पे कथा हो रही थी, और कथा में जो है एक स्वामी जी, एक महाराज जी जो है कथा कर रहे थे, और उन्होंने बोला बच्चा पैसा पैसे को खींचता है. At the same time, one beggar was passing by from there. एक भिखारी बाजू में से जा रहा था, and he listened this कि बच्चा पैसा पैसे को खींचता है. ये उसके दिमाग में स्पार्क कर गया. इमीडिएटली उसने अपने जेब में हाथ डाला. He has 1 rupees coin. उसके पास में 1 रुपए का कॉइन था. तो वो जो है एक ऐसे जगह पे चला गया, सुनसान जगह पे, जहाँ पे मंदिर था, और मंदिर के आगे एक पेटी पड़ी हुई थी. तो उसने स्वामी जी से सुन के रखा था पैसा पैसे को खींचता है. एंड इमीडिएटली व्हाट हैपेंड कि उसने जो है क्या कहते हैं वो पेटी के आगे अपना 1 रुपए का कॉइन ऐसे करके रख दिया. 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 पैसा तो ऊपर से नीचे आया ही. बट आफ्टर सम टाइम उसके हाथ का जो कॉइन था इट इज ड्रॉप आउट एंड जस्ट दान पेटी के अंदर चला गया. तो आपका बबूला हो गया, हाथ में आया हुआ पैसा भी चला गया. सो इमीडिएटली ही मूव्ड टुवर्ड दैट प्लेस वेयर कथा वाज गोइंग ऑन. और वहां पे जाके उसने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया. बोले आपके तो प्रिंसिपल ही रॉन्ग है. यू सेड दैट कि पैसा पैसे को खींचता है, और यहाँ तो जो है उल्टा मेरे हाथ का पैसा उधर चला गया. तो महाराज जी ने बोला मैंने कहाँ गलत बोला? बोले नीचे भी पैसा था, तेरे हाथ में भी पैसा था, नीचे के पैसे ने तेरे पैसे को खींच लिया, तो मैंने किधर गलत बोला? पावर किधर ज्यादा था, फोर्स किधर ज्यादा था? तो जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर वीक फोर्स वाली चीज चली जाएगी. सो सेम थिंग इज हैपन हियर आल्सो. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जहां पे फोर्स हैवी होगा वो लोअर फोर्स वाले चीज को अपनी तरफ खींच लेगा. ओके, हियर particles of matter acting on each other work on each other and they bound to each other. Okay, and very rapidly they move. Just I am showing you an example. आप यहाँ पे देखो, आपको शायद ध्यान आएगा. See, this is crystal clear water. बिल्कुल देखो clean है, कोई इसमें नहीं है. मैं इसमें एक ड्रॉप बराबर है, ये देखो इसमें मैं इंक का डाल रहा हूं. जस्ट आई एम पुटिंग 1 ड्रॉप एंड यू सी द सिचुएशन. अब आप धीरे धीरे इसको अंडरस्टैंड करोगे. सी हाउ इट इज गोइंग टू डिसॉल्व इन इट. ये तीनों की तीनों बातें बता रहा है. सी आई एम नॉट स्टेयरिंग इट बट हाउ इट इज मिक्सिंग. इट मीन्स कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वहां पे ये धीरे 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 जा रहा है. सेकंड इसने बताया है कि पार्टिकल्स ऑफ कंटिन्यूअसली मूविंग. सी दीज आर कंटिन्यूअसली मूविंग. देखो, एंड देयर इज बाइंडिंग फोर्स एंड ड्यू टू दैट दिस कंप्लीटली डिफ्यूज इन इट. ये पूरी तरीके से जो है डिफ्यूज हो जाएगा. मैं इसको रखता हूं अभी. आफ्टर सम टाइम यू विल सी. ओके, इट विल बी डेफिनेटली डिसॉल्व. So by this experiment you can conclude this all 3 things which are the characteristics of the particle. Okay, all these 3 things. Particle of matter have space, जगह है. Particles of matter are continuously moving, that one also you see. And third, particles of matter attract each other, because अगर वो attraction नहीं होता था तो definitely ink जो है वो water में dissolve होती नहीं थी. So by this 3 things I show by one experiment. Okay, and after understand this one, next is what is the state of matter. तो matter का state क्या है, that we are going to learn in next lecture. But before that you can see it is completely dissolved. देखिए अभी भी particles जो है move on कर रहे हैं, but in down part you can see it is completely dissolved. Okay, so by this experiment I am completing this lecture here, and next lecture we will try to understand the state of
matter. Okay.